Hello class 8 students, I am your maths teacher Nitin. In today's class, we will start new topic radical and surd, which is the part of exponents and power. Okay, we are in lecture 2 and we will start radical. Okay, now student, what is radical? Now do remember one thing student, if I am explaining you with an example, if you have a number that is a to the power n, here a, it is a rational number, right? N, it should be positive integer, okay? N should be positive integer and this n under root a should be irrational, okay? You keep these three things in mind. If you find these three conditions, then a given number is known as a radical. Okay students, first this a should be a rational number, second this n should be a positive integer, and the third this overall n under root a, it should be an irrational number. Right students? Good. Now I will explain you with an example. Let's say we have a number. Now student, it is clear what are radical. As I told you, a should be a positive number, rational number, and n should be a positive number, and overall this should be an irrational number. Now take an example. Let's say we have 30 under root 3. Okay. Now 3 under root 30. Now this 30 is a rational number. First condition हमारा satisfy हो गया, and this 3 is a positive integer. Now we will check 30 का हम factors बनाते हैं student. 30 का फैक्टर हमारा क्या आएगा? ओके, सो 30 के फैक्टर हमारे आते हैं. 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5. किसी का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है. दैट मीन्स नाउ इट इज कन्फर्म दैट 3 अंडर रूट 30 इज एन इर्रेशनल नंबर. क्लियर है? दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर. नाउ my three conditions are satisfied. First one, 30 should be a rational number, this 3 should be an positive integer, and overall this number should be an irrational number. So I can say that 3 under root 30 is a radical. Okay, so we can say that it is a radical. It is a radical. Or you can say that it is a surd of order 3. Surd of order. Clear students? Good. Now student, I hope it is clear that what are radicals. Okay. Now I will explain you with few more examples. Let's say we have a number 3 under root 27. Okay. And the second number is square root of 9. We have two such numbers. Now are these radical? क्या ये radical हैं? You will check them. We will check the first number, that is 3 under root 27. 3 under root 27 means either we have a is equal to 27. First condition, a is a rational number. A is a rational number, that is correct. Now this n should be positive. We have plus 3. It is positive. Now the third condition, overall this number should be irrational. Okay. Now we will check. Cube root of 27 is how much? You can write 3 under root 27 is equal to 3 into 3 into 3. Pairing them 3, so your answer is 3. Now 3 is not an irrational number, it is a rational number. Therefore 3 under root 27 is, it is not a surd, okay, or radical. Clear student? हमारा दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड वन इज नॉट सेटिस्फाइड. थर्ड कंडीशन था कि ओवरऑल दिस नंबर शुड बी इरेशनल, but we find that 3 आ रहा है हमारा आंसर. 3 is rational number, so it is not a radical. Now we will check the second one. Under root 9 you can write it as 3 into 3. Your answer is 3, right? You know the value. n का value इधर 2 है, a का value we have 9, right? But under root 9 is not a rational number. Okay, therefore this number is also
not a radical. Right? Clear हो गया students? Good. Now students, I will explain you with some more example. You have to express the following in exponential form. You have to write in exponential form, right? Write in exponential form. Okay? Now the first example is under root 5. Now under root 5 जब आपको कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं गिवन होता है, that means it is 2. Okay? कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, that means it is 2. Now you can write it as 5. Now this 2 will come as 1 upon 2. Okay? Now this is in exponential form. Second example से clear होगा student? Second example is 4 under root 3. Right? So you can write it as 3. ये 3 आ जाएगा हमारा power. This 4 will come as 1 upon 4. So we have written 4 under root 3 in exponential form, and our answer is 3 to the power 1 upon 4. Now the third example student, 6 under root 100. We will remove this, हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, and this 6 will become 1 upon 6. So these are the exponential form of a given number. Right students? Good. Now students, second example, write in radical form. Okay? Now आपको क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिलेगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडिकल फॉर्म. फॉर एग्जांपल वी हैव 13:1/2. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, आपको ये अंडर रूट का साइन लगाना है, एंड दिस 2, ये जो नीचे वाला 2 है अपॉन में, दिस विल बी रिटन हेयर. तो योर आंसर इज 2 under root 3. सो दिस इज एन रेडिकल फॉर्म. राइट? नाउ second example, let's say 5/11. 5/11 to the power 1 upon 3. Okay? Now while writing in radical form, you will first of all make this sign. This is a root sign. Now write 5/11 inside it. We have written this 5/11 under root sign. Now student, this 3 upon 3, this will come here in this space. ये जो space है यहाँ पे हम इसको लिखते हैं. नाउ दिस इज द रेडिकल फॉर्म ऑफ 5/11 टू द पावर 1 upon 3. क्लियर स्टूडेंट? वन मोर एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा. लेट इट बी 7/4 टू द पावर 1 upon 11. ओके, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ रूट साइन. राइट? राइट दिस वैल्यू अंडर रूट साइन 7/4. नाउ दिस 1 upon 11, ये जो 11 है, इट विल कम हेयर. ओके, good. So it is clear to you now. Positive rational number as exponent. Now next topic is positive rational number. हमारे पास positive rational number है ना, as an, we have to write them as an exponent. Positive rational number. Now student, positive rational number as exponent. सपोज आपके पास स्टूडेंट कोई नंबर है, लेट इट बी a. ओके, a टू द पावर p अपॉन q. ओके, you have any number, positive rational number a to the power p upon q. So it is equal to a to the power p to the whole power 1 upon q. Okay, and vice versa. A to the power p upon q, it can be written as a to the power p and bracket close to the whole power 1 upon q. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट का लॉ लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, आपको सेम वापस मिल जाएगा. सो a to the power p upon q is equal to a to the power p and to the whole power 1 upon q. राइट स्टूडेंट? अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. लेट वी हैव a की वैल्यू हमने 4 लिया, 4 की पावर 3/4 है. ओके, इट इज इक्वल टू 4 to the power 3 to the power 1/4. Okay, these both values are one and the same thing. Okay,
इफ यू अप्लाई द प्रोडक्ट लो आपको ये वापस से यही नंबर मिल जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? गुड. Now student, it can be written as 4 to the power 3 means 4 4 are 16, 16 4 are 64. You can write it as 64 to the power 1 upon 4. Okay. Now again I told you earlier हमने conversion सीखा था ना. Now ये exponential form है. You convert it into radical form. So it can be written as ये 4 आएगा, ये हमने बनाया 64 to the power 4. Clear है students? So that's how we convert them and write them in radical form. Now students, negative rational number as exponents. Okay. अब हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ फॉर एनी जनरल नंबर, लेट्स से यू हैव a टू द पावर माइनस p अपॉन q. Okay, a to the power minus p upon q. Now using exponent law, it can be written as 1 upon a. रेसिप्रोकल लॉ यूज किया हमने, ये मेरा पावर पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट. ओके, a to the power minus p upon q इज इक्वल टू, हमने इसको रेसिप्रोकल किया और हमारा पावर पॉजिटिव हो गया. ओके, नाउ इट कैन बी रिटन एज फर्दर 1 की पावर p अपॉन q अपॉन a to the power p अपॉन q. क्लियर स्टूडेंट? 1 का कुछ भी पावर होता है, आंसर हमारा 1 ही आएगा. इज इक्वल टू, ऊपर हमारा आंसर 1 ही आएगा स्टूडेंट. एंड इन डिनोमिनेटर वी विल गेट a टू द पावर p अपॉन q. राइट? सो इट कैन बी फर्दर रिटन एज क्लियर है? Now for any number, for any rational number which is with negative power, you will convert using exponent law this power into positive. Now हमने इसको bifurcate कर लिया. Now our a to the power minus p upon q is equal to 1 upon a to the power p upon q. Right student? Now I will make this more clear by taking an example. Let's say we have an example 4 to the power minus 3 upon 4. Right? Now student, how we will solve it? First of all, we will convert this negative power into positive power. How? We will make reciprocal of 4. So it can be written as 4 to the 3 upon 4. Right? Now 1 to the power 3 upon 4 and 4 to the power 3 upon 4 is equal to 1 का कुछ भी पावर होता है, it will always remain 1 and this 4 to the power 3 upon 4. Right? Now student, what we can do, we can write it as 1 upon 4 to the power 3 to the power 1 upon 4. ओके, हमने इसका रेडिकल में जो एक्सप्लेन किया था वो यूज किया है हमने. नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 upon 4 to the power 3 is how much? 64 to the power 1 upon 4. Right? So it can be written as further 1 upon square root 64 to the power 4. This is your answer. Clear student? That's how we will solve these questions. Good. Now student, one more example. You have to solve, then let it be minus 2 minus 9 to the power minus 2 upon 3. Okay, now what we will do, we will convert this negative power into positive power. So we will reciprocal 9 and 2 upon 3. Right? Now it can be written as 1 to the power 2 upon 3 and 9 to the power 2 upon 3. Any power of 1 is always 1. Okay. Now 9 can be written as 9 to the power 2 and to the whole power 1 upon 3.
right? Now this is equal to 1 upon 81 to the power 1 upon 3, right? It can be written as 1 upon square root cube root upon 3. So this is our answer. Okay, so that's how we can write any negative number into a radical form. Clear? Good. Now student, there are certain laws and we will learn about those laws. Law of exponents for rational index. For rational index. Okay, now student, first law, for any rational number a is equal to rational number. student, हम जब a लेते हैं that means it is a rational number. Okay, and x or y are any two rational numbers. Again x and y, they are also rational numbers. Okay, तो we are talking about rational numbers और उनके पावर को हम कैसे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट लॉ इज, अगर a टू द पावर x है मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर y है, देन एज वी लर्न अर्लियर हमारा आंसर आएगा ax प्लस y, राइट. सेकेंड लॉ b, if a to the power x divided by a to the power y, then our answer will be a x minus y. Okay, now third rule c, if a to the power x and again it is a to the power y, then answer will be using product law. हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट a, आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई. ओके, सेम लॉ एज वी लर्न इन एक्सपोनेंट्स, वही सब यहाँ अप्लाई करेंगे. ये आपको और क्लियर करते हैं कि हम एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे. सो यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम क्लियरली, जैसे हमने एक्सपोनेंट में किया था, सेम वी विल डू हियर, बट ओनली डिफरेंस इज हमारे पास वहाँ पे इंटीजर्स होते थे, यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, राइट. रेशनल नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म के नंबर. द थर्ड लॉ, सी आई डी पार्ट, डी रूल. D rule is a upon b, any number a upon b to the power x can be written as a to the power x upon b to the power x. हम पावर इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, राइट. एंड a to the power 0 is always 1. Okay student, so these are the laws of exponents. Do remember them, we will apply in these questions. Okay, now student, you have to find the value. Example करते हैं, find the value of first part is 15625 to the power 1 upon 6. This is the question. Okay, now student, आपको थोड़ा हिंट लेना पड़ेगा. ये 1 upon 6 है, तो you have to convert this number into the power 6. हमको बेस लेना है और उसका पावर 6 ही हो, ताकि ये 6 से 6 कैंसिल हो जाए. ठीक है. Now it is 15625. It can be written as 15625 can be written as 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 1 2 3 4 5 into 5, right. Now we have converted 15625 into the base 5. हमारा base 5 आएगा to the power 6. Okay, now ये जो 1 upon 6 है, ये as it is हमारे साथ में ये. Okay, now what we will do, we will apply the product law जो हमने पढ़ा था. पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 6 इंटू 1 अपॉन 6, 6 से कैंसिल आउट हो गया एंड योर आंसर इज 5. ओके, क्लियर. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये जो 1 अपॉन 6 आए या 1 अपॉन 5 आए या 1 अपॉन 3 आए, आपको इस गिवन नंबर को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है, सच दैट
कि हमारा पावर इसके साथ मैच कर जाए. नाउ सी सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज 32768 टू द पावर 1/15. ओके, अब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाए एंड वो वाला फैक्टर लेना है जिसका पावर 15 आए. ओके, ये पावर 15 लाना ही लाना है. ठीक है, तो फैक्टराइज 32768 एंड व्हाट यू विल गेट. 32768 को फैक्टर्स करेंगे, सो 32768 can be written as, I have already done the factor of this part. 32768 can be written as 2 into 2 into 2 how many 2s? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 32768 क्या फैक्टर्स बनाएंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट. नाउ दीज आर 15, तो यू गॉट द बेस. अब आपको बेस मिल गया, बेस का पावर 15, पावर 1/15. वेरी गुड. नाउ यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ, 15 कैंसिल आउट 15, so your answer is 2. Clear student? That's how you will find out the values. Okay students, now in today's lecture हमने रेडिकल को समझा है. व्हाट आर रेडिकल्स, कैसे हम रेडिकल्स को रिकग्नाइज करते हैं. ओके, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज किया है. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हम कैसे रेडिकल्स को सॉल्व करते हैं. all these topics are discussed in today's lecture. Okay, so go through today's lecture because this lecture is very important next exercise के लिए. Okay, bye bye, take care.